Dear friend, today we are going to discuss a very beautiful protocol, that is NADA, NADA, the National Acupuncture Detoxification Association. This is NGO. So basically, this association working for drug and alcohol problem, and this started the journey from the New York, and he is the great doctor, Dr. Michael O. Smith. And this organization was developed in the 1985, or we can tell this organization has registered on the 1985, and from that time onwards it's working on the behavioral health, addiction, mental health and emotional trauma. तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1985 में हुई थी, तब से ये काम कर रहा है और बहुत सारे कैंप इंडिया में बाहर और इंडिया के बाहर इन्होंने लगाए हैं. And this is really very successful protocol, very highly successful protocol. There is no doubt only the 5 points, but very highly success ratio, right? Especially if we talk about in the mental health. So let's see now. So in the NADA protocol, we are putting only 5 points. हम सिर्फ 5 पॉइंट कान में लगाते हैं. So we put only 5 points in the ear. So we are putting the points in the right ear or in the left ear, both the ear together. So the 5 point this side and the 5 point this side, total will be 10 points. पूरे 10 पॉइंट लगाते हैं. Now there is no any sequence like the battlefield acupuncture. In this acupuncture protocol, there is no sequence. It is not like that first we have to put number 1, then you have to put number 2, then you have to put number 3. There is no sequence like this. ऐसा कोई sequence इसमें नहीं है. किसी भी कान में लगाओ, कोई भी पॉइंट पहले लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसमें सीक्वेंस की बात ही नहीं की है. There is no questions, there is no discussion of the sequence of the points. So the 5 point in the right ear and the same 5 point will be in the left ear. We are going to put in this NADA protocol. Now these are the points. So first I am telling you all the points directly, then we'll think about the scientific explanation. तो पहले समझिए ये 5 पॉइंट हैं और फिर इन 5 पॉइंट को क्यों लगाया जाता है उसके कारणों पर भी हम बात करेंगे. तो first point is the sympathetic. Okay, so the first point will be sympathetic, second point will be Shen, third point will be kidney, fourth point will be liver, and the fifth point will be lungs. Don't worry, we are going to discuss in detail. So only these 5 points are there. The same 5 point you have to put in the right ear and same 5 point you have to put in the left ear. यही 5 point आपको right कान में भी लगाने हैं, यही 5 point आपको लेफ्ट कान में भी लगाने हैं. यही नाडा प्रोटोकॉल है. लेकिन प्रश्न आता है कि आखिर ये 5 पॉइंट क्यों लगाने हैं, इसके अलावा और लगा दें तो, और इनमें से एक छोड़ दें तो. So now the question comes in our mind, why these 5 points only? Can we put some other point? Can we add some other point? तो अब क्या होता है कि सब लोगों का दिमाग अलग अलग होता है. तो कुछ लोग इसको प्रोटोकॉल को देखते हैं और बड़ी बारीकी से देखते हैं और सोचते हैं यार इसने ब्रेन का पॉइंट तो ऐड नहीं किया, तो अब वो बनाते हैं कि दिस इज माय न्यू प्रोटोकॉल, नाउ आई विल ऐड ब्रेन पॉइंट हियर. ओके, सो ही इज थिंकिंग, द मेनी पर्सन आर थिंकिंग आई हैव टू वर्क ऑन द डी एडिक्शन, but the author has not taken the brain point. Why the author has not taken brain point? Might be author has forgot to take the brain point. लगता है जो ऑथर है, जो साइंटिस्ट है, भूल गए. वो शायद ब्रेन पॉइंट लेना चाहिए था लेकिन गलती से भूल गए होंगे, तो चलो हम ऐड कर देते हैं. ऐसे कई लोग सोचते हैं और मुझे बताते भी, डॉक्टर साहब हम नाडा का प्रोटोकॉल तो लगाते हैं लेकिन वो शायद वो गलती से ब्रेन का पॉइंट भूल गए हैं, तो एक हम अपने मन से ऐड कर देते हैं. मैंने कहा वेरी गुड, even the patient will get the result. So if you are adding 1 or 2 more points, there is no question, no problem. But this protocol is entire protocol. This protocol is a complete protocol. Author is very intelligent. He has taken care each and everything, whether you talk about the brain or you talk about everything,
हर चीज को उसने कंसीडर किया है। सो लेट्स सी, पहले मैं आपको इसके बेनिफिट दिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ दिस नाडा प्रोटोकॉल। This protocol is very good for reducing the craving of the alcohol, craving of the tobacco, cigarette, even the person having addiction of the psychiatric medicines. The person is taking the nicotine, cocaine, heroin, etc. Even many more things. तो ये प्रोटोकॉल इन सब पर काम करता है, चाहे उसको अल्कोहल या तंबाकू या सिगरेट, बीड़ी, निकोटिन, कोकेन, हीरोइन, चरस, गांजा लेने की आदत हो, सब पर काम करता है। Not only this, if some person want to get rid from the addiction, so he will be suffering with the withdrawal symptoms. So this protocol is also working on withdrawal symptoms. जब आप कोई भी शराब, बीड़ी, हेरोइन, चरस छोड़ना चाहते हो तो आपके शरीर में विड्रॉल सिम्टम होते हैं, ये उन पर भी काम करता है। दिस प्रोटोकॉल इज वेरी गुड, इट इज ब्रिंगिंग द कामनेस। माना कि आप कोई एडिक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी आप इस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर सकते हैं अपने दिल में शांति लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, अच्छी नींद पाने के लिए, अपना गुस्सा, एजिटेशन कम करने के लिए। सो वेदर यू आर नॉट टेकिंग द whether you are not addicted, even after that you can use this protocol, because this protocol is bringing the calmness, bringing good sleep, reducing the anger, agitation and the irritability. This protocol is very good for all the mental emotional trauma. कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई एब्यूज होता है, जैसे कभी किसी का कुछ सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो या किसी का कुछ मेंटल और इमोशनल एब्यूज हुआ हो। सो व्हेन द पर्सन abused because of anything, whether the mental abuse, emotional abuse, sexual abuse, this protocol is going to work in that condition as well. तो किसी भी प्रकार की किसी को भी प्रताड़ित किया गया हो और उसके मन में बहुत ही गहरे घाव लगे हों, उन पर भी काम करता है। सो दिस इज द वेरी गुड प्रोटोकॉल फॉर द ट्रॉमा रिकवरी एंड द हीलिंग। हम इसका प्रयोग ट्रॉमा रिकवरी और हीलिंग के लिए कर सकते हैं। दिस इज द वेरी गुड प्रोटोकॉल फॉर क्विटिंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, and so all of us need this protocol frequently. हम सभी को ये प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम सब लोग तनावग्रस्त हैं और चिंता हम सबको सताती है। हम सभी लोग भी वीक में एक बार दो बार इस प्रोटोकॉल का प्रयोग कर सकते हैं। सो वी कैन यूज दिस प्रोटोकॉल, वी कैन पुट दिस प्रोटोकॉल once a week or so. So this protocol is also helping in the headache or the migraine or some heaviness, unwanted heaviness. जब आपके सिर में दर्द होता है, फालतू का भारीपन रहता है, तब भी प्रोटोकॉल काम करता है। हम वीकनेस में भी इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ नाडा प्रोटोकॉल। नाउ लेट्स प्रोसीड है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि इसमें हमारे जो 5 पॉइंट है, अब हम उसकी बात करते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द लिवर। अब मैं लिवर से स्टार्ट करना चाहूंगा। सो लुक एट द लिवर हियर। सो लिवर मीन्स ईथरिक सोल। What is the meaning of liver? Liver means etheric soul. आप सबको लिवर का मेरिडियन पता होगा. You might be knowing the liver meridian. So this is the liver meridian. This is the liver meridian. The liver 1, liver 2, liver 3. लेकिन ये तो भाई लिवर का बाहरी पाथ है. This is the external path of the liver meridian. As per the external path of the liver meridian, liver start from the toes and liver ending on the chest. तो लिवर के जो बाहरी सर्कुलेशन के आधार पर लिवर हमारे पैर के अंगूठे से प्रारंभ होता है और हमारी छाती पर खत्म होता है। अब मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक YouTube वीडियो में लिखा था कि लिवर मेरिडियन हमारे सिर से स्टार्ट होता है। तो किसी ने YouTube में कमेंट किया, सर लगता है आप गलती से भूल गए, लिवर मेरिडियन तो पैर से स्टार्ट होता है ना। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, भाई मैं इंटरनल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, I'm not talking about the external circulation. So I have told in my YouTube video, the liver meridian start from the D20 or the Sahasrara chakra. So someone has commented, doctor, you might have forgotten, liver meridian is not starting from the D20. It is starting from the toes. Then I replied, yeah, you are right, but I'm talking about the internal circulation. So I will show you now internal circulation. अब मैं आपको लिवर का इंटरनल सर्कुलेशन शो करूंगा।
So look at once again here. So now we can see the external path now will go to the internal. अब देखिए जरा. Now this is the internal circulation of the liver meridian. Now we can see how the liver meridian is starting from the top of the head. हमारे सिर से start हो रहा है. The liver meridian is starting from the top of the head, and this is the governing vessel 20. अब तो मान लो कि गवर्निंग वेसल 20 से स्टार्ट होता है. मेरी बात ना मानो, लेकिन डायग्राम की बात तो मान लो. सो गवर्निंग, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्निंग वेसल 20. नाउ इट इज गोइंग टू द आईज. We can see how the liver meridian going to the eyes, how the liver meridian going to the lips, how the liver meridian passing from the throat, then going to the liver, then going to the genital part, then going to the knee, and going to the meeting with the our liver channel. सो अब इसमें तो देखा हमने कि लिवर का चैनल हमारे सहस्त्रार चक्र से स्टार्ट हो रहा है. ये हमारी लिवर का इंटरनल सर्कुलेशन है. अब इसको ये भी भूल जाइए कि लिवर चैनल है. दिस इज नॉट द लिवर चैनल, दिस इज द लिवर चैनल एज वेल एज दिस द लिवर चैनल, बट इन द acupuncture वी आर टेलिंग इट सोल और द etheric सोल. दिस इज कॉल्ड सोल. यानी कहते हैं कि हमारी आत्मा का प्रवेश हमारे सहस्त्रार चक्र से होता है और फिर हमारी आत्मा इस रूट से ट्रेवल करती है, लिवर में विराजमान होती है. लिवर में विराजमान होती है का मतलब है इस पूरे रूट में विराजमान रहती है. सो द etheric souls entering from the सहस्त्रार चक्र, traveling throughout the body and residing in this liver channel. So do not consider that the etheric soul lives on just on the liver. No, the soul is living on the entire liver channel, but the internal channel. So I'm talking about the internal channel. अगर हमारा लिवर मेरिडियन पैर से स्टार्ट होता है और छाती में खत्म होता है, आंख तक जाता ही नहीं है, तो आंख को ठीक कैसे करता है? आपको आंखों की प्रॉब्लम होती है तो लिवर का ही तो इलाज करते हो. If the person suffering with the eyes disease, we are treating the liver. Why? Because internal circulation of the liver is passing through the eyes. So now what I want to tell you, so if someone is having too much anger, so liver energy, etheric soul will get agitated. Someone is having too much energy in this liver internal path. So the etheric soul means the yang energy, who is coming from the heaven and entering from the D20, then passing from whole body. So if this, the etheric soul get disturbed, means the person is agitated, person is having anger, irritability, then it means the etheric soul is disturbed. Then we can see the behavioral changes in the person. So our first responsibility, calm down the etheric soul. Calm down the etheric soul. It has been told in the acupuncture कि अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर उसका लिवर ठीक नहीं है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया उसे अच्छी नहीं लगेगी, वो व्यक्ति परेशान रहेगा. Even the person is millionaire, but the liver is not working nicely, person will not be feeling good enough, he will feel agitated. So when the person is coming to us, doctor, I am suffering with fatty liver, I am having too much anger, then we are telling, okay, you are not feeling good enough. You tell, yes, doctor, I'm having everything. I'm having good wife, my successful children, they are very settled. I'm having very good property, very good home. But even after that, I'm not feeling good enough. Why? Because liver is disturbed, the etheric soul is disturbed. So we will calm down the etheric soul. हम उसकी etheric soul को calm down करेंगे. कैसे करेंगे? Liver को point लगा देंगे. We are having very wonderful point in the ear, that is liver. हमने जैसे ही liver को point लगाया, हमारी etheric soul शांत हो गई. यही तो काम हम करते हैं. अगर एक स्टेप और ज्यादा काम करना हो तो ear apex को blood relate कर दो. Even you can bleed the ear apex. You can do work instantly within 1 minute. Within 1 minute, etheric soul will be calmed down. As soon as you do the blood relating from the ear apex, कान के apex से blood निकाल दो. इसे हम कहते हैं the point of liver yang, the point of etheric soul. So this the apex, the ear apex is called the point of ear apex. The point of liver yang,
और द पॉइंट ऑफ ईथरिक सोल। तो हमारे एक्यूपंक्चर के साइंस में कभी भी दिन होगी तो रात होगी, है ना, लाइट होगी तो डार्कनेस होगी। इफ डे इज देयर देन नाइट विल देयर, इफ लाइट इज देयर देन डार्कनेस विल बी देयर। It cannot happen as per the acupuncture science, only day, 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 or only light, light, light. Without the darkness, there is no light. In the same way, when some young soul or the etheric soul who is coming from the sky, then definitely there will be yin soul. कि एक तो आत्मा वो है जो आसमान में रहती है, उसे हम लिवर की आत्मा कहते हैं, लिवर सोल या इथरिक सोल कहते हैं, यांग सोल कहते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है सहस्त्रार चक्र से। लेकिन एक दूसरी सोल भी होती है जो जिसे हम कॉर्पोरियल सोल कहते हैं, वो जमीन से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरियल सोल। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड and now we'll discuss the next soul, that is corporeal soul, because without the yin, yang is incomplete, and without the yang, yin is complete. So the etheric soul, we have learned about the liver, so this is connected with the liver. Now we will talk about the corporeal soul. So this is the corporeal soul. So the corporeal soul means who is coming from the earth. So who is coming from the earth and entering in the human body from the earth. That is called corporeal soul. And the soul who is entering from the D20, that is called etheric soul. Etheric soul or the liver, उसे हम etheric soul कहते हैं। और जो जमीन से प्रवेश करती है उसे हम कॉर्पोरियल सोल कहते हैं। अब हम कॉर्पोरियल सोल की बात करेंगे। द कॉर्पोरियल सोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरियल सोल? द कॉर्पोरियल सोल इज आल्सो कॉल्ड अर्थ सोल, एंड दिस इज द हेवन सोल, दिस इज द अर्थ सोल, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम द अर्थ. So the upper soul is called heavenly soul. Heavenly soul. So let's see this in this image. तो ये ह्यूमन बॉडी है. Look at this, the human body. So now one soul entering from the sky, that is liver or the etheric soul. And if the soul is disturbed, then person will feel agitated, anger. The another soul entering from the feet, that is called corporeal soul, and that reside in the lungs. What is the function of corporeal soul? The function of corporeal soul is very important. Corporeal soul का function क्या है? अगर आपकी corporeal soul अच्छी है तो क्या होगा? तो होगी happiness. Happiness. If corporeal soul is good, then you will be happy. If this soul is not good, if this soul is disturbed, then the person will be sad, depressed, will feel melancholy, will be crying a lot, and even having lots of negative feelings. If the corporeal soul is not good, the person will be having lots of negative feeling. If the corporeal soul is good, then person will be having too much happiness. तो corporeal soul अगर आपकी अच्छी है तो आपके अंदर happiness होगी, और अगर ये अच्छी नहीं है तो आपके अंदर unhappiness होगी. So this is residing in the lungs. So if your lungs is balanced, you will be happy. If your lung is imbalanced, you will be sad, depressed, feeling of guilty, crying. These all negative emotions are coming in the body. अब होता क्या, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, so when the person is dying, so after the dying, what is happening with both the soul? Suppose this is the person. So when the person is dying, so the etheric soul will go up and will merge in the sky. This etheric soul will merge in sky. कहते हैं कि ये etheric soul कभी नष्ट नहीं होती. So this etheric soul will go in the universe
and it will continue for the next birth, right? So your one birth, second birth, third birth, the journey will be continue because of this soul. आपकी एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा इस सोल के कारण होती है. Now when we talk about the corporeal soul, the corporeal soul coming from the earth, and after the death it is merging on the earth, never coming back. ये आपका शरीर है. ये शरीर की तरह कि एक बार धरती में मर्ज हो गया. So the corporeal soul is merging back to the earth, but the etheric soul is having journey from one body to the another body to the another body, and this soul is storing all the impressions of your thoughts, of your habits, of your mentality, your tendencies, your fear, and lots of things are carried by this etheric soul. इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हम कैरी करते हैं, right? So now what I am doing, I am also putting one another point of the lungs so I can balance the corporeal soul. तो मैंने अपनी corporeal soul को भी balance कर दिया. This is called yin soul because it is coming from the earth, right? So I have balanced the yang soul. Also I have balanced the yin soul. So I have balanced the liver and I have balanced the lungs. Now yang balance और yin balance दोनों बैलेंस हो गए. अब हम क्या करेंगे? Now we will make the synchronization. हमने दोनों को इंडिपेंडेंटली बैलेंस किया. अब दोनों के अंदर हम एक सिंक्रोनाइजेशन लेके आएंगे. We are going to bring a perfect synchronization. अब दोनों के अंदर हम सिंक्रोनाइजेशन कैसे लेके आएंगे? So for that we will move to the next point, that is called sympathetic. What is the role of sympathetic? The role of sympathetic, balancing sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. So sympathetic nervous system means balancing the yang and yin. तो जो पॉइंट दोनों को बैलेंस करे उसे हम कहते हैं sympathetic point. So our next point will be sympathetic because we want to bring a complete balance in yin and yang. Now we want a complete balance in yin and yang. So we'll do with the help of sympathetic point, and the sympathetic point is the point who balance sympathetic and the parasympathetic nervous system. So this is the point. We are going to discuss shortly this point. So this is the point which is called sympathetic point, which is going to balance sympathetic system and the parasympathetic system. ये दोनों को बैलेंस करने वाला है. It is hidden inside. ये अंदर की ओर हिडन होगा. तो हमारे 3 पॉइंट हो गए. तो चलिए बताइए कौन कौन से पॉइंट हमने समझे. हमने कौन कौन से पॉइंट समझे. अब आप ये बताइए कि क्या हमने ब्रेन को छोड़ा है? नहीं छोड़ा. ब्रेन आ गया लिवर में. लिवर इज द, we have already considered etheric soul because liver channel is the great channel who is supplying the brain. Okay, तो हमने कितने पॉइंट लिए? अब आप बताइए, आपने एक को लिवर लगा दिया, लंग लगा दिया, सिंपैथेटिक लगा दिया, आपने बैलेंस कर दिया ना. You have balanced the personality completely just by putting 3 points. One is the liver, second is the lungs, third is the sympathetic. You have balanced everything. Why the person craving for the smoking, cigarette, alcohol? Because the person is having lots of worry, stress, anxiety. There is imbalance between the sympathetic and parasympathetic system. So want to balance again, so craving for the things, right? तो जो व्यक्ति ये क्रेविंग करता है, क्यों करता है? जैसे अभी आपको एकदम टेंशन होगा, कुछ नहीं है तो आप बोलोगे यार चाय बनाओ, वो भी तो एडिक्शन हो गया है ना. चाय बनाओ, चाय बनाओ. कब आपने बोला चाय बनाओ? यार बहुत प्रेशर है, चाय तो ऑर्डर करो, चाय तो बनाओ. ऐसे होता है. और जो बोतल वाले लोग होते हैं, यार बहुत एडिक्शन है, वो बोतल खोल लेते हैं. स्मोकिंग वाले की हाथ अपने आप उसके पॉकेट पे पहुंच जाता है. स्ट्रेस होता है ना, automatically, unconsciously, the hand is reaching to the pocket with the person who is smoking.
And the person who is taking the tobacco unconsciously searching the tobacco when he under the stress. So it happened automatically because brain is telling, give little dopamine, give little energy. So this happened automatically. तो हमने 3 पॉइंट लगा दिए. अब हम आगे की बात करते हैं. This is feed. This is super feed in our subconscious mind. Okay, we are coming. Don't worry. अब लोगों को चिंता है कि 2 पॉइंट का क्या होगा जो छूट गए. अरे भाई, 2 पॉइंट ही छोड़ दिए हमने. कौन कौन से छोड़ दिए है ना. What about Shen man? Which how who? चलिए आपकी चिंता भी दूर कर देते हैं. So we are coming to the next point. So now, you know, this is as per in the acupuncture and in the psychiatric medicine, it has been told very clearly. In our brain, we have lots of part in our brain like the amygdala, midbrain, amygdala, prefrontal cortex, this and that and that. And let's talk about the amygdala. चलिए amygdala की बात करते हैं. You know what is amygdala? सुना है आपने? What is amygdala? नहीं सुना. पता नहीं कैसा नाम ही कैसा amygdala. Amygdala is the part of brain and very sensitive when we are child till the 7 years of age. एक बच्चा जब 7 साल का होता है तब तक amygdala उसका डेवलप हो जाता है. The child is getting fully developed amygdala till the 7 years of age. So if the child lives under the fear till the 7 years of age, then amygdala will get the shape of fear. If the child is living in the atmosphere of like very confident, no fear, then the amygdala will develop in accordingly. So amygdala is the part of brain who is affecting the child throughout the life. So I will give you one example. One person who have got 100 percentile throughout in all the examination, 100 percentile in class 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and got admission in the IIT, Indian Institute, IIM, Indian Institute of Management Science, with very, very good percentage, got a very good jobs, and package started in the crores. And suddenly, because of something, he got one demotion. You know that in the demotion, they have reduced little payment, 2% payment, and he did commit suicide. आपने मेरी बात समझी? एक बच्चा जो जिंदगी भर स्कॉलर रहा, IIM से पढ़ के निकला, जिंदगी में कभी उसने असफलता नहीं देखी, बहुत अच्छा जॉब मिला, करोड़ों की पैकेज वाला, और एक ही बार उसका जो पेमेंट है 2% कम कर दिया. 2%, यानी अगर वो महीने के 5 करोड़ मिलते थे तो 4.5 करोड़ कर दिए, या 4 करोड़ 80 लाख कर दिए, है ना. उसने सुसाइड कर लिया. ये स्टोरी पूरी न्यूज़पेपर में आई थी यहाँ पर. Have you seen anyone? Have anyone seen this story? No. भाई आप देखो, this is so the failure is also very important. When the person is never getting failure in the life, then only single failure he can do, commit suicide. So the person, we are getting failures every day, failures every month, every week, multiple failures. So we are fully developed. Now, if the failure coming in the life, we are fully adapted with the failure, we are not getting affected. Why? Because we are getting failure. If we are getting succeed, then we are thinking, oh, how we have done this. Because success मिलती है तो लगता है यार, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया. फेलर मतलब ये तो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, ये तो होना ही है, ऐसा है. Okay, so what I want to tell you, amygdala is the part of brain, suppose till the 7 years of life. The child lives in the very strict behavior,
do that, do this, but no emotional support. No emotional support. Then foundation of the child will be very, very weak. So I would like to tell you about the foundation of the child. So look at here. Who make the foundation of the child? बच्चे की जड़ें कौन बनाता है? So look at in this image. Like this is a tree. ये एक वृक्ष है. And these are the roots. So the roots are the foundation. Roots are foundation. If roots are strong, then tree will be highly stable. If the roots are poor, then tree will not be stable. अगर वृक्ष की जड़ें मजबूत हैं तो वृक्ष मजबूती से टिका रहेगा, आंधी तूफानों में असर नहीं होगा. The tree will not get affected with any storm, with the wind, with the air, with anything, because the roots are stronger. So in the life, if our roots are stronger, the meaning of roots means kidney. The kidney is the foundation of the human body. Kidney is the root of the human body. If your foundation is strong, if your kidney is strong, if you are getting good love, good support during the childhood, especially till the 7 years of age, then you are developing a very good amygdala, which is storing the very good informations and which is making your kidney stronger. So in the future, when you are passing through the ups and downs of the life, you might be get upset, but immediately you will be stable because your roots are stronger. But if your kidney is poor, if your amygdala is poor, if your limbic brain or the emotional brain is poor, then even the small wind can destroy the whole tree. एक जरा सा आंधी का झोंका भी आपको गिरा सकता है अगर आपका सही डेवलपमेंट नहीं हुआ. आप कितने भी लाइफ में सफल हो जाओ, सफलता कैसे गिनी जाएगी? आपका पैकेज कितना है, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, आपके पास कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, ऐसी सफलता देखी जाएगी ना. सफलता ऐसी तो देखी नहीं जाएगी कि आपको मैंने परेशान किया तो भी आप मुस्कुराते रहे. ऐसे तो कोई सफलता नहीं देखेगा. भाई तेरी जेब में कितना पैसा है बता. जेब में पैसा है तो तू सफल है ना. बैंक में बैलेंस है तो तू सफल. So the person we have seen, we have listened, every month there are lots of people doing commit suicide even after having everything. लोगों के पास खुद के हेलीकॉप्टर्स हैं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी सुसाइड करते हैं. क्यों करते हैं जी, बताइए? Why they are doing commit suicide? If they are having each and every luxury, it means they are having some poor foundation. So they have not developed during the childhood in the way they should develop. So now this types of person is coming in the group of addicted people. Oh, I am not feeling good. Then this person will start immediately charas, heroin, ganja, everything, because this people is having poor foundation. So he's searching the foundation in the drugs. ऐसे व्यक्ति जिनके फाउंडेशन कमजोर होते हैं, जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला होता है, वो प्यार को ढूंढते हैं. फिर उनको क्या होता है कि कोई अच्छा उनको लगता है, कोई ग्रुप मिल जाता है जो हेरोइन का सेवन करता है, और इनको उस ग्रुप में शामिल होके जब ये भी सेवन करते हैं तो इनको लगता है कि वो खोई हुई चीज मिल गई. Okay, now once they become addicted, then they never go back, because every drug having their own addiction. Okay, so the kidney is foundation. So when patient is coming to us, we are treating one point of kidney so that we can make the foundation strong, right? And in
and even during the childhood, especially till the 7 years of age, we should give lots of love, support, compassion to the kids. After 7 years, if we scold them, then there is no problem. But till the 7 years of age, the kid's mind is really very highly sensitive, and each and every part of the brain is getting developed till the 7 years of age. तो जो बचपन के 7 साल होते हैं वो इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर उसमें आपने बच्चे का ध्यान रख लिया तो जिंदगी भर के लिए बच्चा एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाएगा। और सफल व्यक्ति तब कहा जाएगा, आप उसका पैकेज देखकर उसे सफल व्यक्ति नहीं कह सकते। सफल व्यक्ति तब कहा जाएगा जब जीवन के उतार चढ़ाव में भी वो मुस्कुराता रहे। And even there are lots of ups and downs, the person keep on smiling. So we will put the kidney point, right? So we have added the liver point, that is the etheric soul. We have added the lung point, that is the corporeal soul. We have balanced the sympathetic and parasympathetic. Now we have also added the kidney point because we want to work on the foundation. हम foundation पर काम करना चाहते हैं. We want to work on the foundation. Now the fifth point. Now fifth point we are going to use, that is for the tranquilizing the mind. Even after that, in the life, we are having too much stress, we are having pain, we are having sleep disorders, we are having lots of stress, depression, anxiety, multiple things. So the Shenman means like we are going to the temple. We are keeping our forehead on the door of temple, on the floor of temple. Shenman का मतलब है कि भगवान के हम मंदिर में गए और भगवान के मंदिर में जाके हमने अपना माथा टेक दिया, भैया अब मेरे बस की बात नहीं, भगवान तू ही मुझे पार लगा. So this is the point which is called tranquilizer point. It is keep bringing good sleep, calmness, peacefulness in our heart and in our brain. So other name of this is called the gate of spirit. So the same point is called gate of spirit, means this is bringing peacefulness in our spirit. This is also called the divine gate. So this is the divine gate or the door of God who is bringing peacefulness in our human mind. So finally we are also putting this point, Shenman. So as soon as we put the Shenman, our protocol get completed. जैसे हमने Shenman लगाया तो हमारा protocol complete हो जाता है. So accordingly, as per the NADA protocol, there are 5 points. So we can see here sympathetic, Shenman, kidney, liver and lungs, right? तो चलिए अब बताइए कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं. I want to ask you one question. किडनी का काम क्या केवल यूरिन को फिल्टर करना है? Whether the kidney just doing the filtration of urine as per the acupuncture? Tell me, yes or no? Not at all. Kidney is the foundation of the human body. If your kidney is stronger, means you will never get affected in the life by ups and downs of the life. आपको जीवन में कोई हिला नहीं पाएगा अगर आपकी किडनी स्ट्रांग है. Now tell me, liver is only connected with digestion? लिवर का संबंध सिर्फ पाचन से है क्या? पाचन से सिर्फ? So the answer is not at all. Liver is not only connected with the digestion, liver is playing a very important role. Liver is playing very important role. Now I would like to show you few internal circulation path for your clear understanding. चलिए मैं आपके कुछ internal circulation path भी दिखाता हूं. So let's come here. So we have already discussed about the liver. हमने सबसे पहले liver की बात की. Now look at the liver. How is liver is affecting the brain and it is supplying the brain. Liver कैसे हमारे brain को प्रभावित करता है और हमारे सहस्त्रार चक्र से होता हुआ brain को पार करता हुआ संपूर्ण शरीर में होकर जाता है. So liver is the meridian. We are talking about the internal circulation of the meridian who is passing through the whole route. अब मान लो किसी का अल्कोहल सेवन के कारण अगर लिवर पर प्रभाव आया है तो लिवर का पॉइंट उसे भी ठीक कर देगा. लिवर also will correct the point.
liver also correct the problem of the liver if it happened because of the alcohol. Now let's talk about the, अब मैं आपको बताना चाहूंगा लंग के बारे में. Let's talk about the lung. So if you talk about the lung, look at here. So we can see the internal circulation of the lung. हमारा ये lung है, हम देख सकते हैं. The internal circulation of the lung. So this is the internal circulation of the lung. It is affecting the lung, it is affecting the stomach, even it is affecting the intestine. हमारा लंग का इंटरनल सर्कुलेशन हमारे पूरे पाचन तंत्र को कंट्रोल करता है. द इंटरनल सर्कुलेशन ऑफ द लंग इज आल्सो controlling all the digestive part. So when the person eating tobacco is creating some problem of the digestion. The lung is also having connectivity with the digestive disorder. Now we will come to the kidney. Kidney is highly important. Look at here. Now you can see the kidney, how the kidney is connected with the heart. So you are stimulating the kidney, but you are also relaxing the heart. आप किडनी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप किडनी के साथ साथ लिवर, हार्ट, लंग्स, थ्रोट सबको बैलेंस कर रहे हैं. So these points, the kidney point is not only controlling the kidney points also relaxing the heart. तो हमारा किडनी पॉइंट हमारे हार्ट को भी रिलैक्स करता है. So ultimately these 5 points are not the ordinary point. So let's see the location of all the 5 points. So look at this image. So the first point will be Shen. There is no first or second something. We can start from sympathetic as well. So let's start from the sympathetic. तो चलिए पहले हम sympathetic से start करते हैं. Let's talk about the sympathetic first. So if I turn the image of the ear like this, then I can see the sympathetic point inside. मैं sympathetic point को देख सकता हूँ. Now this point is located inside here. So this point is the hidden inside the, ये point हमारा ये helix के अंदर छुपा हुआ है. So this is the helix and this is the inner part. This is the inner part which is called interior helix. इसे हम कहते हैं interior helix, IH, or the interior helix. So this sympathetic point is hidden inside. Look at here. So this is a hidden inside, and this is the sympathetic point, which is called sympathetic autonomic point, who is balancing the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. So let's see once again. एक बार फिर से देखते हैं हम. So as per the auricular acupuncture, this is the anti-helix or the spine. So this is doing the representation of the spine. This is the anti-helix. As per the auricular acupuncture, इसको हम anti-helix कहते हैं, जो हमारे spine को represent करती है. Now from here it is getting divided in 2 parts. So we can see it is getting divided in 2 parts. One part is going upward, one part is going downward. So this is the whole part is anti-helix. इस पूरे part को हम anti-helix कहते हैं. तो if the end we follow the lower part of the anti-helix, अगर हम anti-helix के lower part को follow करते हैं, so keep on following and reach on the last. So the last point is called sympathetic point. So we can consider the last point as a sympathetic point. हम sympathetic के point को last point consider कर सकते हैं. So let's see here. If you look at in this image, आप अगर इस image में देखें, so this is the sympathetic point, but not on the helix, but hidden inside. ये ऊपर की ओर नहीं है, बल्कि अंदर की ओर hidden है. That's why we cannot see the point now. अभी हमको point नहीं दिख रहा है. हम कान को जैसे थोड़ा सा मोड़ेंगे, as soon as we fold the ear like this, we can see it. अब हम देख सकते हैं कि अंदर दिख रहा है. This is the point. So the first we will put the point sympathetic. So what happened with the sympathetic? As soon as we put the point sympathetic, it relaxes the system. As soon as it relaxes the system, it dilates the blood vessels. It relaxes the blood vessels. It calms down the mind. तो जैसे हम sympathetic का point लगाते हैं,
ये हमारे पूरे सिस्टम को काम डाउन कर देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, उसमें ब्लड का बहाव एकदम आराम से हो जाता है। किसी को बहुत एजिटेशन हो, एंजाइटी हो और ब्लड की गति बढ़ गई हो, बीपी बढ़ गया हो, it will calm down. So sympathetic point will calm down and it will reduce the pressure. So it's a very good point. Now the second point will be Shenman. अब हम दूसरे point की बात करते हैं. The second point will be the Shenman. So how to locate the Shenman? So for locating the Shenman, first we should know this triangular shaped part. इस triangular shaped part की हम बात करते हैं. We can divide this triangular shaped part in from the center. इस ट्रायंगुलर शेप पार्ट को अगर हम सेंटर से डिवाइड कर दें तो शेनमैन पॉइंट ऊपर की ओर पाया जाता है. सो द शेनमैन पॉइंट लोकेटेड इन द अपर साइड. इफ वी डिवाइड दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द मिडिल, और इसे अगर मैं तीन पार्ट में बांट दूं 1, 2 and 3, so this is located here. This is located here in the upper part. So this is the location of Shenman. The meaning of Shenman means divine gate or the gate of spirit. इसे हम कहते हैं the gate of spirit or the divine gate. It's a really very good point to calm down the brain, to calm down the nervous system. इसे हम कहते हैं हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. So this is the Shenman. So this is the Shenman, right? Fine. So now let's proceed for the next point. अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं. So look at now. हमारा अगला पॉइंट है किडनी. So kidney is the foundation of the human body. हमने आपको बताया कि हमारे शरीर का फाउंडेशन है. So this is the triangular fossa. This is the Shenman. If we draw the line vertical from the Shenman, अगर हम Shenman से एक vertical line draw कर देते हैं, so we will reach on the kidney. हम किडनी पर पहुंच जाएंगे. The kidney is located in this concha, in this superior concha. तो किडनी का पॉइंट हमारे superior concha में होगा कि as per the auricular acupuncture, हमारे auricular acupuncture के अनुसार this is the kidney, this is the urinary bladder, and in that way this is the whole urinary path and this is the urethra. Auricular acupuncture के अनुसार किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और पूरा जो यूरिन का यूरेटर और यूरिन का पाथ ऐसे होता है. सो ऑल द यूरिनरी पाथ इज लाइक दिस. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ किडनी व्हिच इज लोकेटेड जस्ट डाउन टू द शेनमैन. जो शेनमैन के एकदम वर्टिकल डाउन होता है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ किडनी. किडनी इज द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. If the kidney is stronger, then the person will be stable even after the ups and downs of the life. जीवन के उतार चढ़ावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी किडनी मजबूत है. अब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम किडनी का पॉइंट लगाकर उसकी किडनी को मजबूत करेंगे. So we will strengthen the kidney by putting this point. Now let's go ahead and see the next point. That is the point of liver. And we already have discussed about the liver. हमने liver के बारे में काफी बातें पहले ही की हैं. We already have discussed about the liver. So this is the liver. Liver in the upper part, we know. Liver in the upper part, in the superior concha. हम जानते हैं कि हमारे कान का ये concha है, ये superior concha है. इस image में थोड़ा आपको confusion हो सकता है. You might get confused with the image, but I would like to show you. So we can consider this like this. So if suppose this is the imaginary line, liver in the upper part, right? So liver will be in the upper part, in the superior concha. Liver हमारे superior concha के upper part में होता है. So liver is the point who is connected with the anger, agitation, and frustration, irritability, and the etheric soul. Etheric soul से connected है. And the final point will be lung. अब lung के लिए हम आपको बताते हैं. Let's talk about the lung. So the final point will be lung. So this is the inferior concha. The center point of this inferior concha will be heart. इस inferior concha के center का जो बिंदु होता है उसे हम heart कहते हैं. The 1 point upper is lung, 1 point lower is lung. ऊपर का भी lung है, नीचे का भी lung है. So the both points are lung. So you can choose any one. आप दोनों में से कोई भी एक choose कर सकते हैं. लेकिन जो आप right कान में choose करेंगे वही आपको left कान में भी choose करना होगा. You can choose any one lung point, or even you can choose both the lung point together.
So look at once again, आप एक बार फिर से देखिएगा. Let's see once again. So this is the inferior concha, and the center point is the heart. And we have one lung down, one lung up, and they are representing the right and left lung. You can choose any one point, upper or lower, and you have to choose the lung point. So whatever lung you choose, suppose you choose lower lung, then lower lung choose in the both here. Suppose you choose upper lung, then upper lung choose in the both here. So the lower lung means you are choosing the same side lung. So if suppose I am choosing the lower lung here, then I am choosing the same side lung. Then lower lung here, I am choosing the same side lung. So I am covering both the lungs. Okay. तो मैंने लंग के पॉइंट को भी चूज कर लिया. आपने कहा नहीं नहीं हम तो ऊपर का लंग चुनेंगे. चुन लीजिए, कोई बात नहीं है. You can choose even the upper lung, or even you can choose both the lungs, right? So in this way, this is the 5-point protocol. ये हमने 5 पॉइंट का प्रोटोकॉल समझा. अब हमने 5 पॉइंट जो समझे हैं. Let's see now. So the point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, and the point number 5. So we have taken the sympathetic point. Who is balancing sympathetic and parasympathetic nervous system. Then we have taken the Shen point. Who is tranquilizing the mind, bringing the peace and calmness. Then we have taken the kidney point. Who is making your foundation stronger so you are not having any fluctuation due to ups and downs of the life. So the kidney point. Then we have chosen the liver point, and finally lungs. So liver is the point of etheric soul. Lung is the point of corporeal soul. So we have chosen the 5 point. हमने 5 पॉइंट का चयन किया. सिंपैथेटिक को चुना जो हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा. शेनमैन मन को शांत प्रशांत करेगा. किडनी हमारी जड़ें फाउंडेशन को मजबूत बनाएगी, और लिवर हमारे ईथरिक सोल का, और लंग हमारे कॉर्पोरियल सोल का पॉइंट हुआ. So in this way we have chosen the point. Note down. So look at here. So this is the anti-helix, and we keep on following the anti-helix and going inside, and the last point is sympathetic. So look at once again. So this is the anti-helix, and we keep on following the anti-helix, reaching at the last, and this is the last point, that is sympathetic, and this is the first point. So we can put the needle or we can put the seeds. हम needle भी लगा सकते हैं, हम seed भी लगा सकते हैं. So let's see now. I have inserted the needle. मैंने needle लगा दी. थोड़ा ऐसे काम करें. So you can see I have inserted the needle inside. That is on the sympathetic, right? That is on the sympathetic, deeper inside. So second point will be Shen. हमारा दूसरा point होगा Shen. So we can put the very gentle needle like this. This is the Shen. Okay. Then the third point, just at the line of Shen, that is here, that is kidney. So we can see the kidney point here. The kidney point will be in the line of Shen. One minute. So look at here. This is the kidney point. Okay, deeper inside. So this is the liver, and the last, this is the lungs. Done. Now you can see this is the liver. This is the liver, and here this is the lungs. So the center of inferior concha is here. ये हमारे inferior concha का center है. इसके नीचे lungs है. And the upper point is liver. You can see here. This is the liver. So sympathetic
Shen, kidney, liver, and lungs. So if you look at my ear, this is the sympathetic inside. Sympathetic inside. Now this is the Shen. Shen is here. Now from the Shen, if we go down, this is the kidney. Now the question about the liver. So from the 0 point, if we go up, this is the liver. From the 0 point, if you go down, this is the spleen. So do not go down, just go up. So from the 0 point, if you go up, that is the liver. ये liver है. Now this is the inferior concha. The center is heart. Now from the heart we go down, that is lungs, and we go up, that is lungs. So we have two lungs here. So we are, if we put the needle here, then this is the first point. That is the sympathetic. That is a sympathetic, right? Now we will put the second point, Shen. This is the second point, Shen. Clear? Now we are going to the third point, that is kidney. So at the level of Shen, let's put the Shen, let's settle the Shen little up, because it is covering the, yeah. So at the level of Shen, if we go down in the inferior concha, so this is the kidney. So Shen and kidney are in the same line. Kidney is clear or not? Kidney is clear. And remember one thing, the kidney point is not on the wall. Do not put the kidney point by mistake on the wall. Do not put the point on the wall. This point is not on the wall. This point is below the wall here. That is the kidney point. Now the next point is liver. So liver point will be here. So this is the liver point now. Look at here. This is the liver point in the upper side. Okay, I'll collect the position of liver. Okay. Oh, wonderful. Blood is coming. Excellent. So liver point will be here. Yeah, now it's good. See the liver point. Now the final is lung. Now final is lung. So when we are talking about the liver point, so from the 0 point, liver point is slightly up. Now the finally lung point. So this is the center. Just below that, that is the lung point. This is the lung point. Same point I will put in both here. Remain the needle for 30 minutes to 45 minutes. So this de-addiction, आपको बताऊं कि जैसे ही मैंने सबसे पहला सिंपैथेटिक और शेनमैन लगाया, एकदम मन शांत प्रशांत हो गया. इतने इफेक्टिव पॉइंट है ना. इतना आप लगा के देखिए. आपके पास निडल होंगी तो लगा के देखिए. अभी कभी लगा के देखिए. नीता जी ने तो जरूर लगाया होगा. नीता जी ने लगाया. नीता जी एकदम ऐसे आगे रहती हैं. बहुत बढ़िया है. कुछ लोग एकदम एक्टिव हुए हैं, वो तुरंत लगाते हैं. दे पुट इमीडिएटली.
और कुछ लोग मूवी की तरह देखते हैं। हाँ लेकिन ठीक है, पेशेंट आएगा तब भी आप लगाओगे ना, है ना, हर नो प्रॉब्लम. सो पुट द पॉइंट एंड फील द इफेक्ट. यू विल फील द वार्मनेस इन योर ईयर वेरी शॉर्टली. आपको तुरंत वार्मनेस लगेगी. एंड एवरीवन नाउअडेज इज हैविंग stress, anxiety. So this auricular protocol is really very wonderful. ये auricular protocol stress anxiety के लिए. कान गर्म हो गया, मेरा भी कान गर्म हो गया. I'm feeling warm sensation in my ear. गर्म गर्म. So the feeling of heat, it is called DCHI. DCHI is a very good sign. DCHI का मतलब है it's a really very wonderful sign. The warm feeling, warm sensation coming in the ear. Okay. तो चलिए आपको थोड़ी सी बात और बता देता हूं. लेट्स सी फ्यू मोर थिंग. थोड़ी सी और बातें बता. हमने जब पिछली बार नाडा की क्लास की थी तब हमने ज्यादा समझा था ब्रेन के फंक्शन के बारे में, कैसे एडिक्शन हमारी बॉडी में काम करता है, हम क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं. सो आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट लिटिल बिट concept about the addiction, why we people are getting addicted. फिर हम जिन लोगों ने निडल लगाई है उन सबके कान भी देखेंगे. एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, तब तक जिन लोगों ने कान में निडल नहीं लगाई हो तब तक लगा लो. फिर हम आपके कान देखेंगे, आपके कान का फोटो खींच के हम रखेंगे अपने पास एज ए मेमोरी. So let's see now. So look at this image, and in this image you can see, you can see the multiple part of the brain. आप हमारे ब्रेन के मल्टीपल पार्ट को देख सकते हो. So these all parts are getting affected when the person is addicted to any types of addiction. मैं आपको सिंपल इमेज में दिखा देता हूं. सपोज ये हमारे दो न्यूरॉन्स है. These are the two neurons, and there is a message from the one neuron passing to the another neuron. हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जाता है. मैसेज, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पास करता है. So like you want to perform anything, so because we are having millions neurons, so brain is giving the order and one neuron is passing the message to the another neuron, and we are doing any work, any function, any action. आप जब खुश होते हो, खुश में भी यही होता है कि एक न्यूरॉन डोपामिन का सीक्रेशन करता है और दूसरे न्यूरॉन उस डोपामिन से खूब एकदम प्लेजर फील करता है. So the neuron is doing the secretion of dopamine. तो जब when the person is taking afim, heroin, charas, ganja, then what is happening? Then suddenly the secretion is becoming too high, too much secretion. Then person feels euphoria. The meaning of euphoria, suddenly you are having too much secretion of the dopamine. तो पहले तो डोपामिन का सीक्रेशन कम था. हमारे अंदर नेचुरली डोपामिन का सीक्रेशन होता है जिससे हम खुश होते हैं. लेकिन जब किसी ने हेरोइन, चरस, गांजे का सेवन किया तो इस डोपामिन का सीक्रेशन जरूरत से ज्यादा मात्रा में होने लगा. तो उसको ज्यादा खुशी मिलने लगी और उस खुशी को ढूंढने के लिए उसने बार बार सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन चालू कर दिया. Now what is the next step? In the next step, what is going to happen? Look at here. There is no secretion of the dopamine. अब हो ही नहीं रहा सीक्रेशन. अब वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पी रहा है तब भी नहीं हो रहा, तब भी परेशान है. So there is no secretion of the dopamine even the person is taking the opium, charas, ganja and all. तो कुल मिला के क्या होता है? Now the person will get the dopamine only when taking the charas, ganja, heroin. मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जनरली अभी हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत डोपामिन सीक्रेट होता है जिससे हम खुश होते हैं. लेकिन जब आप एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं तो आपका ब्रेन तभी डोपामिन बनाता है जब आप उस ड्रग का सेवन करते हो. सो इन द नॉर्मल पर्सन, इन द नॉर्मल लाइफ, वी आर having the secretion of the dopamine to feel pleasure. But when the person get drug addicted, this secretion only happen when you take the drug. And after some time, this secretion even will not happen
you take the drug. So now you have to increase the dose of drug. अब आप डोजेस बढ़ाते हो और डोजेस बढ़ाते जाते हो और फिर भी डोपामिन का सीक्रेशन घटता जाता है। इसलिए लोग जो एडिक्शन के शिकार होते हैं उनको शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सेम डोज से उनको फर्क नहीं पड़ता, तो डोज उनको बढ़ाना पड़ता है। So with the help of this protocol, sympathetic, Shen, kidney, liver and lung, we can decrease the craving of the drug and we can increase the dopamine naturally, and even we can work with the withdrawal symptom. So thank you to Dr. Smith, Dr. Michael Smith, who is running NADA Association and who has bring this wonderful protocol. उनके माध्यम से हम सबको बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल मिला है। हमने बहुत पेशेंट पर आजमाए, आप भी आजमाइए। Okay, so enough for today. This is the completion of this protocol. Thank you so much everyone. If you have any question, you can ask. अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप बताइए। Any question? This protocol is very good for depression. Yeah. किसने लगाई निडल? निडल किसने लगाई? नीता जी लगाई। चलिए नीता जी को मैं पिन करता हूं। नीता जी अपना कान दिखाइए, अपना कान दिखाइए। नहीं, कान नहीं दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा आगे। हाँ, थोड़ा कैमरा सेट करिए, आपके बाल दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं। अच्छा, नाक दिखाइए, नाक नाक दिखाने की कोशिश करिए तो कान दिखेगा। हाँ, नहीं, साइड से साइड से नाक दिखाइए। हाँ, अब परफेक्ट है थोड़ा। यस यस। सो सिंपैथेटिक, शेन, किडनी, लिवर तो बहुत नजदीक लग रहा है। लंग, आप जरा अपना किडनी पॉइंट चेक कर लीजिएगा, बाकी सब सही है ना? Just check the kidney points. So now the few more information. Yeah, right, perfect. Put this NADA protocol for 21 days. ये NADA protocol को 21 दिनों के लिए लगाना है, कम से कम 21 दिनों तक, और लगातार लगाना है। शनिवार रविवार को छुट्टी करोगे तो शेनमैन पर एक सीड लगा के छोड़ देना, और जब शेनमैन पर सीड लगाओगे तो एक सीट शेनमैन पर लगाना और एक ठीक उसके पीछे कान के पीछे लगा देना। इधर look at here. So let's see here. I would like 1 minute. So suppose you are giving treatment on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday, all the 5 days or 6 days. So on the off day, put one seed on the Shenman, but not here. Just on the Shenman, but on the back side. So fill the Shenman and take the seed, but put on the back side. That is called posterior Shenman, and that is the point on the off day. So the हमें ऑफ डे में पोस्टीरियर Shenman लगा देना है। तो हम ट्रीटमेंट 5 दिन करेंगे और शनिवार रविवार को 2 दिन पोस्टीरियर Shenman लगा रहेगा। Okay. So in this way, we have to treat per patient minimum for 21 days. We are getting very good results in the drug addiction, but the challenge is also there. What is the challenge? I will tell you. The people restart taking drugs again after many months or sometime after a year. कि लोग ठीक हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, तमाकू, बुड़ी पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट सब बंद कर देते हैं, और जैसे ही लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव आए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, 2 साल हो गए, बहुत सारे लोग वापस चालू कर देते हैं। इट इज अ वेरी बिग चैलेंज इन द ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रिटेंशन होता है ना, वो कभी कभी किसी पेशेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जीवन तो उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। 1 साल के बाद उनकी लाइफ में कुछ भी घटा और वो डिप्रेशन में गए, तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। सो दे आर स्टार्टिंग अगेन। The posterior Shenman is also very good point. It is working like a Shenman, so it will keep the tranquilizing effect on the off day. Okay, so
our energy will be in the energy will not be in the agitated mode, means we are putting the posterior enchantment so that our treatment effect we want to keep on maintaining the treatment effect with the posterior enchantment. बल बिना we can put the seeds. अगर आप सीड लगाना चाहते हो तो if you want to put the seeds, you can put the seeds for 7 days or the 3 days, then change the seeds. In that way you keep on putting the seeds for minimum for 1.5 month. कम से कम 1-1.5 महीना तक सीड लगाते रहो, हर वीक में बदलते रहो, और ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है. After finishing the 21 days, you call the patient once a week. 21 दिन का ट्रीटमेंट करने के बाद आप उस पेशेंट को वीक में एक बार बुलाओ ट्रीटमेंट के लिए. The bleeding, when the bleeding happened from the liver point, means it's a good, because liver means if we bleed the liver point, it will calm down the liver, it will calm down if there is agitation, irritability. That's why I told it's a good. जो व्यक्ति छोड़ना नहीं चाह रहा उसे बिना बताए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? See, the person, if person doesn't want to be get rid, अगर व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता तो आप उसको बोलो भाई हम पहले तो देखो उसको क्या चाहिए लाइफ में, वो जो चाहता है बोलो हम उसी के लिए कर रहे हैं, है ना. अगर बोले कि मुझे अपनी स्किन अच्छी कर, every person having some sensitive part. Some person want good skin, some person want good hair, some person want good energy. You can tell, okay, we are doing this treatment for your skin, we are doing this treatment, so keep on doing this treatment. अगर कोई व्यक्ति छोड़ना आप बोलोगे कि I want to treat you for the drug addiction. Now patient is telling, no, I don't want. Okay, I will put the point for your skin. It will make your skin bright. Or I will put these points for your spine because you have some pain in the spine. So you can tell anything and do the treatment. आप उसको उस पेशेंट को ट्रीटमेंट दीजिए, कुछ भी बोल के दीजिए. This protocol is very good for all types of addiction, whether the person is addicted to chocolate or the internet. अगर किसी व्यक्ति को इंटरनेट का एडिक्शन है, चॉकलेट का एडिक्शन है, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, we can work. You will feel sleepy, and even I am feeling sleepy, and after this class I will go and sleep. It's a very good and tranquilizing protocol. You are right. Yes, Leela ji, where are you? We want to see the ear of Leela ji. Leela ji, where are you? लीला और लैला, कान में किसने पॉइंट लगाए हैं? हाँ, लीला जी मिल, लीला जी. Yeah. So we'll see the ear of the Leela ji. Sympathetic, Shen, kidney, liver, wonderful, excellent. केवल लंग की पोजीशन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रही है. लंग, otherwise, okay, all points are good, but just make sure about the lungs. आप लंग को जरा देख लो, लंग सही है तो सारे सही हैं. Other point are fine, excellent, excellent, good. शोभा जी, आपने कान में पॉइंट लगाए हैं? लगाए हैं कान में पॉइंट? क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स. अगर कान में पॉइंट लगाए होंगे तो आपको अनम्यूट करूंगा मैं. हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करिए. No, my friend husband, he was very upset. 1 मिनट. आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. नहीं आ रहा है क्यों सर? हेलो, नहीं आ रही है. आई कांट हियर यू. किसी very को आ रही है? important sir. आ रही है आवाज इनकी? आ रहा है. हाँ, अभी बोलिए. 1 मिनट. हेलो हेलो, हेलो बोलिए. नहीं आ रही, नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है. हेलो अभी बोलिए. हेलो सर, प्लीज हाँ, सर. आगे बोलिए.
Hello. Good evening, sir. Very good evening. Yeah, my friend husband, he was very upset. He left the house on February 3rd. Till now, no news. My friend is not sleeping, not eating. She's crying and crying. Can I put these points? Yes, yes. It's a very good protocol for insomnia. Okay. Yeah, you can. Till now, no news, and she is not eating, sleeping, nothing. Yeah. Only crying she is. I can Definitely. put, no? Yes. Okay. Thank you so much, sir. Yes. Thank you. जी नेहा जी, नेहा जी. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग नेहा जी. सर मैंने भी लगाया है. अरे जिसको लगाए वो चले गए. कान दिखाइए. अरे जिसको लगाए वो तो चले गए सर. तो पकड़ के लाइए उनको. एक 2 मिनट दीजिए सर. हाँ ठीक है, 2 मिनट. तब तक हम रति जी से बात करते हैं. या रति जी. हाँ सर. जी रति जी, अनम्यूट योरसेल्फ. मैंने अनम्यूट कर दिया था. हाँ रति जी, सिंपैथेटिक, शेनमैन, लिवर, लंग्स का दिखाइए जरा. लंग्स का नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहे हैं. बिकॉज हाँ लंग्स का. रति जी गायब हो गई. रति जी का आ गए सर, मेरे वाले आ गए सर. हाँ जी, हाँ जी. रति जी आपने सही लगाया, बस मुझे लंग्स का दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ दिखाइए, दिखाइए आपके पेशेंट कौन है बताइए. हाँ दिखाइए कान. नेहा जी. हाँ ये तो कुछ उजाला और बीच में अंधेरा दिख रहा है. हाँ कान दिखाइए. कान, गर्दन दिख रही है, कान नहीं दिख रहा. कान नहीं दिखाई दे रहा है. थोड़ा ऊपर ऊपर ले जाइए कैमरा. और ऊपर और ऊपर, थोड़ा और ऊपर. यस परफेक्ट. सो सिंपैथेटिक. शेनमैन आपका ऊपर गया. शेनमैन ने ट्रायंगुलर फुसा छोड़ दिया, ऊपर चला गया. उसको अंदर लाइए. किडनी को और नीचे लाइए. किडनी को आपको अंदर ले जाना पड़ेगा. लिवर को भी थोड़ा सा अंदर ले जाना पड़ेगा. लंग्स दिखाइए. लंग्स चलिए, अच्छा ना आपने दिखा दिया. लंग्स आपका फिर भी सही है, या थोड़ा सा ऊपर. लंग्स आपके सारे पॉइंट सही है. 1-1 मिलीमीटर इधर उधर है बस. थोड़ा 1-1 मिलीमीटर. थैंक यू सर. है ना. थैंक यू अच्छा ना आपने सो किया. आपके पॉइंट देखिए. सबसे पहले मैं शेनमैन की बात करता हूं. शेनमैन आपका खड्डे में नहीं है. शेनमैन शुड बी इन द ट्रायंगुलर फोसा. राइट. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. पॉइंट्स आर जस्ट 1 मिलीमीटर गैप. सो काइंडली पुट द पॉइंट. ओके सर. थैंक यू सर. एनीवन एल्स? किसी ने कान में और लगाए हैं? हाँ जी. जी आपका कान दिखाइए. जी जी हाँ आपने आपके दिखाइए. जी क्या नाम है जी आपका? प्रीति सावला जी. कान दिखाइए. आपकी विंडो दिख रही है, कान नहीं दिख रहा. हाँ अभी थोड़ा सा. हाँ अब ऐसे दिखाइए. पीछे चला गया कैमरा. पीछे चला गया कैमरा. फ्रंट में लाइए थोड़ा. मतलब कैमरा पीछे जा रहा है, थोड़ा फ्रंट में लाइए. थोड़ा आगे रखिए कैमरा, यानी हाँ घुमाइए कान. नहीं हाँ यस. थोड़ा नजदीक ले जाइए. नजदीक. हाँ सही है, सही है. थोड़ा नजदीक ले जाइए. और नियर नियर नियर, लिटिल नियर. सो सिंपैथेटिक, शेनमैन, लिवर, किडनी. वंडरफुल. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. बहुत बढ़िया लगा. वेरी गुड सावला जी, वेरी गुड. एक कान देख लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ गया. चलिए प्रतिभा जी. प्रतिभा जी सही है. प्रीति जी आपका वेरी गुड. हाँ नमस्ते. नमस्ते जी. दिखाइए कान. सर देखिए. सिंपैथेटिक. शेनमैन कहाँ गया आपका? शेनमैन तो अच्छा. हाँ अच्छा नीचे से ऊपर लगा. ठीक है ठीक है. सिंपैथेटिक, शेनमैन, किडनी. और एक्सीलेंट. बहुत बढ़िया. आपने 2 और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगाए हैं, है ना. थैंक यू सर. आप ओके वेरी गुड. सेल्वा जी दिखाइए कान. सेल्वा जी सो योर ईयर. अच्छा सेल्वा जी ने छोटा बच्चा पकड़ लिया. हाँ वेरी गुड. कान दिखाइए पास में. ओके. सिंपैथेटिक दिखाइए. अंदर होगा सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक. इट्स इनसाइड सर. ओके इनसाइड. ओके इनसाइड. थोड़ा पास में लाइए कान. ओके सर. या सिंपैथेटिक. हाँ शेनमैन. किडनी कहाँ है? किडनी. किडनी वेयर इज किडनी? किडनी शुड बी तो हियर. या किडनी. एक्सीलेंट एक्सीलेंट.
ये स्मार्ट मॉडल कौन है भाई? यस, मोना जी दिखाइए कान आपका। हाँ मोना जी, कान 1 मिनट, 1 मिनट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो योर ईयर। मोना जी, मोना जी, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते मोना जी। नमस्ते नमस्ते सर जी। अभी मेरे पास नीडल नहीं है, मैंने अभी नीडल नहीं रखा हुआ है। हाँ लेकिन आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट समथिंग टू यू। हाँ बताइए, एक्चुअली बताइए। नाडा इज एडिक्शन प्रोटोकॉल है हाँ, ना सर जी? हाँ तो हम सबको तो मतलब हेमंत सर के क्लासेस का एडिक्शन हो चुका है, सबको लगाना है। उसको हम नहीं छोड़ने देंगे। सबको ही लगाना है। अभी मैं लगा के आपको फोटो भेजूंगी बाद में। ठीक है जी, ठीक है जी। तो या ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। और कोई कान? यस सुमित जी, यू वांट टू शो योर ईयर? यस, कान दिखाइए सुमित जी आपका। सुमित जी शो योर ईयर। सुमित मिड्डा जी, कान दिखाइए आपका। अच्छा थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा जूम करिए, जूम, थोड़ा सा जूम। सर आ रहा है? पूरा कान नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा है। हाँ अभी सही, बस बस रुक जाइए, रुक जाइए। सिंपैथेटिक, शेन मैन, किडनी लिवर लंग्स, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सुमित जी, वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू सर। तो चलिए इतना काफी है, और बाकी सब लोग तो समझ गए होंगे मेन पर्पज है। बाकी लोग अपने कान के फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, अगर कुछ गलत होगा तो उसमें करेक्शन हम सब लोग एक दूसरे का करेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग भी हम दे देंगे, तो अगर किसी की क्लास मिस हुई होगी सो कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, राइट। हाँ रोशन जी बताइए। जी रोशन जी। जी सर, मैंने लगाए लेकिन 3 निडल थे, 3 ही लगाए, वो भी मिसेस के ऊपर लगाए। हाँ तो थोड़ा सा देख लीजिए सर, हाँ बराबर दिखा लगाए दीजिए, क्या? दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। ये देखिए, सिंपैथेटिक लगाया आपने, शेनमैन लगाया और लिवर, राइट, या हाँ जी। किडनी? नहीं, किडनी लगाया है सर। तो पास में ले जाइए जरा, पास में दिखाइए कैमरा। किडनी हाँ जी, किडनी ये पर है कि देखिए, कहाँ है? नहीं है, हाँ ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है। हाँ। तो किडनी उसके नीचे है क्या? हाँ जी, किडनी की लोकेशन, हाँ उसकी पिन को बड़ी वाली शेनमैन निडल के ली है? नीचे ही है ना, बड़ी शेनमैन निडल, के नीचे। बड़ी निडल ली है क्या, बंचून वाली? हाँ जी, हाँ हाँ जी, देन, हाँ जी, हाँ 1 जून। परफेक्ट, सही लगा, वो निडल का हैंडल दिख रहा है एक्चुअली, सही लगाई हाँ आपने, जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू सर। एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू आर सो जीनियस, इतना जल्दी सीख गए 5 पॉइंट्स, सो क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए बहुत सारी तालियां। और ये प्रोटोकॉल को भूलिएगा मत, इसको लगाइए और सबको, सबका मन शांत करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सी यू सून, थैंक यू सो मच। विल पुट द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप, अगर किसी का मिस हो गया है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। जी राम गोपाल जी। सर आज आयुर्वेदा क्लास है या नहीं? मैंने ग्रुप में डाला था कि नहीं लेंगे हम। ओके सर, थैंक यू। आप शायद इधर हैं तो शायद उधर नहीं देख पाओगा मैसेज। हाँ सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सी यू सून।